Hi students, how are you? In last period, I taught you about common era means Christian era and time before the common era. And today I will start new point measurement of time and method of measuring time. Now, time measurement means measurement of length of time. We can measure the time in second, minute, hour, day, week, fortnight, month, year, century, and millennium. I taught you about what is century and what is millennium. There are different methods to measuring time in the different part of the world. In this different method, common era is mostly used. Generally, we indicate a particular day by writing the date of that day and then name of that month or number of that month, and then we write the number of current year. Means if you want to write today's date, uh, then how to write? First you write the number of today's day, means whatever the number of today's days, 20, 21, in whatever. For example, today's uh, number of today's day is suppose 20. First you write the number of today's day. The today's day number is 20. Then you write the month. Now which month is running? September month. Now what is the number of September month? September month number is 9. Then we write the current year. Now what is the current year? 2020. So what is date? 20 September 2020. You can write today's date in this manner. There are some other methods too. I told you Christian era start in memory of Jesus Christ. It is an age old. The time measuring start to a specific event. For example, Chhatrapati Shivaji Maharaj started new era or Shak. This Shak is known as Rajyabhishek Shak. Rajyabhishek Shak in 1674 AD. ये शक कब शुरू किया गया? 1674 में, टू कमोरेट हिज कोरोनेशन. शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक टाइम पे ये राज्याभिषेक शक शुरू हुआ. शालिवाहन शक and Vikram Samvat. These are two eras that are used in India. The founder of Islam. The founder of Islam means इस्लाम धर्म के संस्थापक. The founder of Islam, Muhammad पैगंबर, migrate from Makkah to Medina, and from that time the Hijri era was started to commemorate this event. इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर, वो मक्का से मदीना माइग्रेट हुए और उसी समय ये हिजरी इरा स्टार्ट हुई. द पारसी कम्युनिटी यूज द शहनशाही इरा. ये जो पारसी समाज के लोग हैं वो कौन सा इरा यूज करते हैं? शहनशाही इरा. Now here they give some important event in the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. First 1630, the birth of Shivaji Maharaj.
Then 1645 Shivaji Maharaj took oath of Swaraj. Then 1666 escape from Agra. Then 1674 coronation ceremony of Shivaji Maharaj, and 1680 the death of Shivaji Maharaj. Now our next point. Our next point is historical period. Historical period we learn in the first lesson. In the first lesson you learn history is a science that tell us about the event that happen in the past. बेटा हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? पास्ट में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन और ज्ञान देने वाला एक शास्त्र है. आई टेल यू व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज अ साइंस दैट टेल अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट. इतिहास क्या है? पास्ट में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन और ज्ञान देने वाला एक शास्त्र है. एवरी बायगॉन मोमेंट मेकअप द पास्ट. इट मीन्स हिस्ट्री इज द पास्ट. जो भी समय होकर गया है वही पास्ट है और उसी पास्ट को हिस्ट्री कहते हैं. The period of history goes back to the time of the birth of our solar system. Solar system means Suryamala. Our solar system came into being about 4.5 billion years ago. And our Earth is the planet in the solar system. It means our Earth was also formed 4.5 billion years ago. The time of formation of the Earth, it is vast period. ये बहुत बड़ा समय था. It is not easy to understand, but it is necessary to divide it into number of stages in order to understand. But ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है. हमें स्टेज स्टेज से समझना पड़ेगा. So that time history divided into two main part. So that the time history divide into two main part. First is prehistoric period and second is historic period. So listen. Prehistoric period. Prehistoric period means before history. In that time, no written record available to write its history. Means नो रिटन एविडेंस टू राइट द हिस्ट्री. उस टाइम हिस्ट्री लिखने के लिए ऐसे कोई भी लिखा हुआ प्रूफ नहीं था. सो इट इज कॉल्ड एज प्री हिस्टोरिक पीरियड. नाउ सेकेंड इज हिस्टोरिक पीरियड. इन दिस पीरियड द रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट हिस्ट्री. हिस्ट्री लिखने के लिए उस समय कुछ लिखा हुआ प्रूफ मिलता था और उस पर उसकी हेल्प से हम हिस्ट्री लिख सकते थे. सो इट इज़ नोन एज हिस्टोरिक पीरियड. थैंक्स बेटा. दिस पार्ट इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट पॉइंट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट पीरियड. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.